Welcome, students. Today we are going to start one more chapter of your class 7th. So, welcome to online GK class for class 7th. Today we are going to deal with chapter 43, that is Ayurveda, Science of Life. Let us start. This unit is Science and Technology. Now, this unit has got following chapters, and today we are going to deal with Ayurveda, Science of Life, chapter 43. Ayurveda. Ayur means life, Veda means science. So, what we get? We get Ayurveda. Literally means the science of life. Ayur means life, and Veda means science. Combined to get the term Ayurveda. Ayurveda. Dhanvantari, the god of Ayurveda. This Dhanvantari is regarded as the god of Ayurveda. Now you should know some fact about Ayurveda. Let us see one by one. It is an ancient medical science which was developed in India thousands of years ago. It means it is very old, very old study. Now Ayurveda developed and evolved into what it is today from several ancient treatises, and most notably Artha Veda, which dated back to 5000 years. So Arthved, we have got four Veds, in which one of the Ved is what? Arthveda, from where it has been taken. And now another fact, the ancient Vedic literature by sages क्या होते हैं? हमारे साधु संत has clearly laid out instructions to maintain health as well as fighting illness through the therapies, messages, herbal medicines, diet control and exercises. These are some techniques by which our sages had been fighting against diseases. And now after that Ayurveda is broken into Ayur plus Veda. It has been formed from the two words Ayur plus Veda, and Ayur means time from birth to death, while Veda means knowledge or learning. So, what does it mean? It means Ayurveda. Now, Ayurveda can be classified in two types. You can see on the screen. So, Ayurveda has been classified in two parts, Swasthya Vritham and Athura Vritham. First means preventive measures and healthcare, while second means curative measures. प्रिवेंटिव मतलब उसको रोकने के लिए क्या तरीके हैं, स्वास्थ्य को हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स, बीमारी के अगेंस्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, और क्यूरेटिव अगर हम बीमार हो गए हैं तो क्या क्या कर सकते हैं. सो इन क्लासिकल संस्कृत literature, Ayurveda was called the science of 8 component. According to Sanskrit literature, we say Ayurveda has 8 components. Let us see which are these components. These are called Ashtanga. And Ayurveda states that a balance of 3 essential substances, dosas equal health, while imbalance equal disease. There are 3 dosas. Which are they? Vata, Pitta and Kapha. आयुर्वेदा कहता है कि हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों को बैलेंस रख के, ज़्यादा इनको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम बैलेंस्ड लाइफ रहेंगे, इक्वल जो चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो हमारी हेल्थ अपने आप ही बेटर हो जाएगी। ठीक है, नाउ वटा, पित्ता एंड कफा, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग पार्ट। अगर वटा की बात करते हैं तो हेडेक है, मतलब सर दर्द, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब आपको पता होंगे, नर्वस एक्साइटी, हाइपर सेंसिटिविटी, इंसोमनिया, प्रीमेच्योर एजिंग, दीज आर सम we can say those covered in vata. After that, pitta means ulcer, fevers, acne, acidity, agitation, anger, burn easily. And after that, kapha contains respiratory ailments, weight gain, fluid retention, allergies, muscuous and congestion. These are the some dosas covered under three types, that is vata, pitta and kaphas. इनको कंट्रोल करके, इनको बैलेंस करके हम क्या है, हेल्थ अपनी मेंटेन कर सकते हैं। नाउ इन आयुर्वेदिक थ्योरी देयर आर 20 क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम गुण बोलते हैं, विच आर इनहेरेंट इन ऑल सब्सटेंस. दे कैन बी क्लासिफाइड इन 10 पेयर्स ऑफ antonyms, we can say antonyms like heavy or light, cold and hot. क्या क्या हो सकते हैं वो? heavy and light, cold and hot. 10 pairs of antonyms are what? heavy and light, cold and hot, unctuous and dry, dull and sharp, stable and mobile, soft and hard, non-slimy and slimy, smooth and coarse, minute and gross, viscous and fluid. It is not possible to discuss all the topics, all the points, because video will be going to lengthier. We will make it short as well. So I am only reading this. Ayurvedic doctors regarded physical and mental existence as well as personality as a unit. Each element having the capacity to influence the others. One of the fundamental aspects of Ayurvedic medicine is to take this holistic approach into account during diagnosis and therapy. इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है. So आगे बढ़ते हैं हम लोग. Ayurvedic medicine uses a variety of products and practices. Ayurvedic products can be made either of herbs only or a combination of herbs, metals, minerals or other materials in an Ayurvedic practice called रसा शास्त्र. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रस शास्त्र बोलते हैं. केवल हमको इसकी रीडिंग करनी, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. ये जो ग्राफ है, जिसको देखना हो देख लेना, ये इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर दैट ये चीज़ और पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, the cleansing practices known as panchkarma is a therapeutic way of eliminating toxic elements from body. ये क्या है? पंचकर्मा. क्लींसिंग प्रैक्टिसेस मतलब साफ सफाई है. पंचकर्मा इंक्लूड्स वमन, विरेचना, बस्ती, नास्या, रक्ताम, मोक्षा. ठीक है. पंचकर्मा इज प्रेसिडेड बाय पूर्वकर्मा, प्रिपरेटरी स्टेप्स, एंड इज फॉलोड बाय पश्चात कर्मा एंड पेडिक कर्मा. ये वर्ड आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको पता होने चाहिए कुछ हैं. तो डिड यू नो व्हाट, ये आपको इंपॉर्टेंट है एक चीज़. दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. व्हेन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली. कब? 21 जून को. सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था, और इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इनिशिएट करवाया था. यू कैन कंट्रीब्यूट इन अ होलिस्टिक वे टू अचीविंग एन इक्विलिब्रियम. जैसे मैं बोला था ना, एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन माइंड एंड बॉडी. इट इज़ बिलीव दैट दिस अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग कैन मेक अ डायरेक्ट एंड यूजफुल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन काइंड्स quest to achieve sustainable development and move towards lifestyles that are in harmony with natures.
So you, if you, it is very right thing. If you follow some proper way, it will help in help you, and also it will help the society in harmonic way. Okay, I hope you have enjoyed the session. Although chapter is not contain things according to you, आपको पता होना चाहिए. The basic idea of behind the chapter is that you should know at least there is some science that is called Ayurveda, and Ayurveda is for treating our some diseases. So this is एक पढ़ाई है, और इतना ही हमको ज़्यादा ध्यान रखना है. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.